make a concrete plan that even if you're remotely interested in becoming a lawyer, go for it, right? It's a good profession. It's an honorable profession. There are a lot of career opportunities as well, local as well as abroad. But education is obviously very important and relevant. So, based on whatever, don't limit yourself, right? Keep your flexibility and your mind open. Consider your family limitations, cultural limitations, anything else, even your own limitations. If you are not a very studious person, you can still become a lawyer. You can do your law degree. सब डराते हैं बड़ी मुश्किल पढ़ाई है, नहीं है इतनी मुश्किल, थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी हो जाता है, right? So even if you have like average grades, you can still end up in a university, right? Either local law हो या foreign law करना है या यूनिवर्सिटी लर्न की LLB करनी है. Multiple universities है पाकिस्तान में भी बाहर भी जो आपको enroll कर लेगी और आप कर भी सकते हैं. बिल्कुल impossible नहीं है. Welcome to episode 4 of the Legal Counsel podcast series. Till date, we have spent 3 episodes talking about postgraduate studies. We have discussed various pathways on how to pursue further education after completing your LLB degree from Pakistan. Now, we want to take a step back and talk about the LLB degree itself, how to pursue it in Pakistan, and what are the available options. So, for a student who has completed his intermediate or his A levels or any equivalent qualification, the local law options will be discussed in this episode. To talk about this, we have invited Mr. Abdulqadir Naeem, who is the faculty and director at Reading Law School, and as he is popularly known, Sir AQ, who will inform us of the various LLB pathways that are possible. Assalamu alaikum, Sir AQ. कैसे हैं आप? Assalamualaikum, how are you? So I'm sure you get this a lot. In terms of law as a profession and studying law in Pakistan, students जो intermediate complete कर रहे हैं या A levels complete कर रहे हैं, so उनको law में अगर आना है और पढ़ाई करनी है पाकिस्तान में, तो what are the options? Okay, so this is one of the most asked questions by a lot of people, and obviously, it's a question that anyone who wants to do law and become a lawyer would ask anyone कि मेरे options क्या हैं, बनना किस तरह है lawyer. अब इसको बड़ा सिंपल तरीके से लेके चलेंगे कि भाई information purposes के लिए कि everyone has that relevant information. So now, first things first, अगर आपको वकील बनना है और लॉ प्रैक्टिस करना है, वॉट एवर डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफ लॉ होते हैं, बट दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन टुडे. If you want to be a lawyer, you need a law degree. That's number one. Without a law degree, you're not a lawyer. Now, popularly, law degree is known as the LLB. And a prerequisite of that is you need to complete your college education. तो अगर कॉलेज एजुकेशन की पाकिस्तान में बात करें तो अलग अलग तरीके से आज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग लोकल बोर्ड, जो आगा खान बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, जो इंटरमीडिएट करके निकलते हैं. काफ़ी लोग ए लेवल्स करते हैं. मल्टीपल स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो ए लेवल प्रोग्राम करा रहे हैं. दूसरे भी प्रोग्राम्स आए हुए हैं विच आर कॉलेज लेवल एजुकेशन, एंड वो करना ज़रूरी है. अब आपने कॉलेज लेवल एजुकेशन कर लिया और उसके अंदर अगर लॉयर ही बनना है, लॉ डिग्री की तरफ जाना है, तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि उसके अंदर कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो मैं लॉयर बन सकूँगा, क्या मैं ये लूँगा तो नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन इफ़ यू टेक साइंस सब्जेक्ट्स, यू टेक कॉमर्स सब्जेक्ट्स, you take social sciences subjects, or you just take like Urdu, English, and some one more subject, right? You can still end up in any university to do an LLB degree, depending on their obviously grade requirements and whatnot. So पहला तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई कि ए लेवल इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट करना है आपने. उसके बाद आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में. अब क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके पास 3 ब्रॉड राउट्स हैं अगर आपको लॉयर बनना है और LLB डिग्री करनी है. पहला राउट, अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इनरोल करें. ना लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल करना है तो पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल की या यहाँ के लॉ के अंदर कि उन्होंने LLB डिग्री की जो ड्यूरेशन रखी है इज़ फॉर 5 years. नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम.
And obviously there's a debate that whether it should be 5 years, it should not be 5 years. It's a long time. Time right now in the new age of evolution is fundamentally important, and education should be done swiftly. बट रिगार्डलेस अगर लोकल यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करेंगे तो 5 साल का पूरा डिग्री प्रोग्राम है, जिसके अंदर प्री रेक्विजिट है कि आपको बीए करना पड़ता है, और बीए के बाद आप एलएलबी करते हो 3 साल। तो 2 साल आपका बैचलर्स इन आर्ट्स होता है, बीए। उसके बाद आप एलएलबी की डिग्री शुरू करते हो, लेकिन ये पूरा क्यूमुलेटिवली 5 साल का प्रोग्राम होता है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड गुड यूनिवर्सिटीज़ विच आर ऑफरिंग द प्रोग्राम, एंड ऑब्वियसली दे हैव द स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। बट उसके लिए पहले एक एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि लैट लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है, वो आप पास करेंगे तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो एक प्री रेक्विजिट है, अदर थिंग्स आर देयर, बट एक प्री रेक्विजिट है ही है कि लैट देना पड़ेगा। सो ये हमारा वो हो गया, 5 साल का प्रोग्राम है, और वो आपने कोई यूनिवर्सिटी से लोकली कर सकता है। 5 साल बाद फिर आप जब ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपके एक दूसरे पॉडकास्ट में आई थिंक आपने डिस्कस किया है। ओके, कोर्ट लाइसेंस किस तरह लेना है या प्रैक्टिस किस तरह करनी है, तो वो आप करें, एंड यू आर अ लॉयर, यू हैव अ लॉ डिग्री, यू कैन प्रैक्टिस लॉ। सेकेंड ऑप्शन, अब बिकॉज पाकिस्तान 1947 से पहले एक कॉलोनी थी यूके की, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो ऑब्वियसली हमारा जो बेस लाइन सिस्टम है लॉ का, और जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूके की कॉलोनीज थी पहले, वहाँ का भी जो लॉ का सिस्टम है विच इज़ द कॉमन लॉ सिस्टम, वो सिमिलर है। इसी वजह से यहाँ पाकिस्तान में यूके की जो लॉ डिग्री है, यूके की एलएलबी डिग्री है, जो लोग वहाँ जाके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, यू गो टू द यूके एंड डू ए लॉ डिग्री। वो करके आएंगे तो वो भी यहाँ पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है, एचईसी के लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूके की, और वहाँ पे तो every university in UK, almost every university offers an LLB program. It's a very popular program in the UK as well, because पूरी दुनिया आती है. It's not just Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, India. A lot of people who want to do law go to the UK. Now the benefit for that is obviously that you apply to any university in the UK. उसके अंदर आप A level या intermediate के दौरान जो आपका टाइम होता है ना, नवंबर दिसंबर, जब आप A level intermediate कर रहे हो और आपके फाइनल एग्जाम्स में होते हैं, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब इज़ द गुड टाइम टू अप्लाई। अब यूके अप्लाई करना है तो कंसल्टेंट्स होते हैं काफ़ी, राइट, यू गो टू देम, दे डू योर एप्लीकेशन प्रोसेस, यूकैस का पोर्टल होता है, देयर यू अप्लाई टू 5-6 यूनिवर्सिटीज़, और अदरवाइज इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैव अ स्पेसिफिक ग्रेड रिक्वायरमेंट अलग अलग। अब नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप एक स्टार स्टूडेंट हो, आपके ए स्टार्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो यू शुड ऑप्ट फॉर गुड यूनिवर्सिटीज लाइक लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इफ यू एंड अप देयर, राइट, दे आल्सो हैव एन एलएलबी डिग्री, किंग्स कॉलेज है, सोएस है, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यूके की है। एंड इफ यू हैव एवरेज ग्रेड्स, तो ऑब्वियसली it's not that you cannot become a lawyer or you will not get an LLB degree, right? You still have a range of universities which take mid-tier students as well, who may have a B and C, D average grade. Even if you have like low-tier grades, so be there are certain universities which will take you in because they have a lower grade requirement. So you will with any grade, right? So a lot of people think I need to maintain a specific grade to become a lawyer and get an LLB degree from a UK university. No, right? I mean, you'll have any category of universities which will cater to you, but obviously the universities which are catering to students with a lower grade requirement may not be highly ranked globally, but the degree is recognized. So eventually your aim of becoming a lawyer can be fulfilled and getting an LLB degree. The second benefit ये है कि आप बाहर जाके करते हो, is that UK के लॉ के हिसाब से the LLB degree is for 3 years. पाकिस्तान में 5 साल है, वहाँ पे 3 साल है, और वो जो 3 साल है, it is equivalent to the 5-year law degree, meaning it is recognized in Pakistan for the purposes of securing a court license and practicing as a lawyer. तो अगर आप लेट्स से पाकिस्तान में रह के करते हो तो 5 साल आपने स्टडी करना है, यूके जाके करते हो तो 3 साल में आपकी बैचलर्स की एजुकेशन, जो एलएलबी की एजुकेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगी। पर ऑब्वियसली इन दो ऑप्शंस को अगर मैं वे करूं तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन है, सबसे दो बड़े इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, इज़ दैट एक कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है। लॉट ऑफ पेरेंट्स इवन टुडे are not very comfortable of sending their children abroad just after A levels and intermediate, and I see wisdom in that as well. क्योंकि देखिए ज़्यादातर आज के ज़माने में, पर्टिकुलरली आज के ज़माने में, there is an overload of information everywhere.
और जितने ए लेवल स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं या कोई और कॉलेज डिग्री एजुकेशन कर रहे हैं, वो majority of them are confused. They cannot make up their mind of what to do. They're bombarded with opinions. So at this stage, when you are in a confused state, when you are still exploring things, and you may have decided, that I want to be a lawyer, and I might want to be an accountant, or might want to be, a psychologist, and you're still weighing, or a computer engineer, software engineer, and you're weighing your options. कि भाई क्या करना चाहिए, and you are more inclined towards law. There is a possibility that even after doing an LLB degree, you might change your mind and you might say that, okay, I did my LLB degree, but I really now don't want to pursue law as a profession. I want to become a psychologist, or I want to go and become a computer software engineer. So it's possible, because at this stage you're confused, and the limited information that you're getting, maybe from listening to these kind of podcasts and talking to parents and your relatives, or talking to your some people who who are lawyers, or in other professions, and they're giving you their limited opinions, like I'm giving an opinion about law and how to become a lawyer. तो वो ओपिनियंस के बेसिस पे अगर आप कर भी लेते हो कोई डिसीजन, तो अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज़ के लिए जाना पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा वो होता है, बिकॉज it's a cultural difference. You're young. They worry about the fact that you might, you know uh, being alone, you might end up making wrong decisions, and so on and so forth. And there's obviously, in Pakistan, the culture is that uh, parents are much involved. Like in the US and the UK, parents become less and less involved in your decision making, once you grow older. But in Pakistan, obviously, and that's a good thing as well, and obviously there's a debate about it, but there's a family culture. तो वो कल्चर के perspective से बहुत लोग नहीं भेजते बच्चों को फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, एंड लॉट ऑफ पीपल सेंड देम एज वेल. सो वो एक कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है सेंडिंग अब्रॉड के ऊपर. एंड दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है. पाकिस्तान के हालात को देखते हुए किस तरह से इतनी अनसर्टनिटी है इन द लास्ट 2-3 years. We've all gone through that cycle. Not even the last 2-3 years, even more than that. Once COVID came in, complete uncertainty, economic downfall, and then the entire chaotic situation in Pakistan right now, the economic aspects as well. The rupee is depreciating, and you can't even make a 5-year financial feasibility. Now today, if you're making and sitting, if a family sits down and says, okay, एक हमारे बेटा बेटी को हमें LLB के लिए यूनिवर्सिटी और UK की कोई यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो there's a pound fee, right? But now you're budgeting in pounds, and their fee is stable, right? That might increase 3 to 5% every year. But how are you going to account for inflation? Is there in the UK as well? Things are very expensive. And then you're coupling it with the depreciation in the Pakistani rupee. And that is something that no one can forecast right now in Pakistan. The dollar went to 330 rupees and it's at 280 rupees, and it's crazy. So how can you make a plan for 3 years, all right, unless you are comfortable with the fact that, okay, I'll keep that open, and I have a lot of money and I don't mind spending it on my child's education. So that's also an implication. People who can't afford it might not be able to send their children. अब यूके के अंदर जाते हो, पाकिस्तान में करते हो, ऑब्वियसली एक टाइम एस्पेक्ट आ जाता है. 5 साल लोकल लॉ डिग्री की बात करते हैं. कॉस्ट चीपर है. इसका कॉस्ट ज़्यादा है, बट वो एक्सपोजर है. ऑब्वियसली आप बाहर जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हो जो शायद यहाँ ना सीख सको. एंड डेफिनेटली देयर बेनिफिट्स. इट्स नॉट दैट इट्स रिडंडेंट, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग देयर. पहले के और दूसरा एक और भी इम्प्लीकेशन कि भाई काफ़ी पेरेंट्स इसलिए भी दे टेक लोन्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, which I would not recommend, because they think that they have that mindset from the पुराने ज़माने का एक mindset था जो आई थिंक चेंज करना चाहिए अब. कि पहले ये होता था कि भाई कोई बच्चा बाहर जाके आता था, तो जब आप जो पेरेंट्स जो थे सारे, राइट, जो आज हैं जिस स्टेज पे, आइदर वो बाहर जाके आए, उनको फ़ायदा मिला, या उन्होंने किसी को देखा, वो खुद तो ना जा सके फॉर वॉट एवर रीज़न, इन्होंने किसी को देखा. और उस ज़माने में जब वो बाहर से पढ़ के आते थे तो बड़ी इज्जत होती थी कि मेरा बेटा वहाँ US से पढ़ के आया, मेरा बेटा या बेटी UK से पढ़ के आई हैं. और लोग बड़ा एक रिस्पेक्ट देते थे कि ओह माशाल्लाह, it was a big thing. In today's time, when the population has grown so much, every other person can go to the UK. It's very accessible. पहले तो universities कम होती थी, अब तो इतनी सारी हो गई हैं. And there are options throughout the world. So now, right now, even the job market, and people would agree, even particularly in the law profession, अगर आप बाहर से भी लॉ डिग्री करके आते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा या कोई सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी. They're starting off at the same level. It really doesn't matter in today's age. So parents also have to understand that and keep that in their decision making matrix, that whether to send my child abroad or not. अब ये दो ऑप्शन की डिस्कशन हो गई. बट
लेट्स सपोज किसी को एक तीसरा ऑप्शन भी है, which is a very unique option, very honestly speaking, because this is something that is very new. New in the sense in Pakistan, although globally it's very old concept. The concept of transnational education. Transnational education is a technical term, but technically speaking, आप जितने भी यहाँ बच्चे हैं पाकिस्तान में, they're exposed to it. ट्रांसनेशनल एजुकेशन मतलब कि आप यहाँ लोकली बैठते हो और कोई फॉरेन प्रोग्राम करते हो, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे हो ही रहा है पिछले 25-30 सालों से. ओ लेवल्स और ए लेवल्स इज ट्रांसनेशनल एजुकेशन. यू सिटिंग इन पाकिस्तान स्टडिंग फ्रॉम अ लोकल स्कूल बट यू गेटिंग अ यूके क्वालिफिकेशन, राइट. ए लेवल्स भी वही है. अब अंडर ग्रेजुएट के अंदर भी यही पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ग्लोबली. एंड थर्ड ऑप्शन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन LLB प्रोग्राम. So University of London, 150 years old, right? It's the head institution for 19 universities and colleges. It includes London School of Economics, UCL, King's College, Birkbeck, SOAS. ये सारी University of London के अंदर आती हैं. ये उनके हेड इंस्टीट्यूशन है. उन्होंने ट्रांसनेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू की थी 150 साल पहले. ऑप्शन क्या दिया कि आप यूके नहीं आ सकते हमारे पास, कोई मसला नहीं. यू स्टे इन योर कंट्री. You enroll with University of London for whatever program you're offering. We will take your exams. We'll give you the curriculum. You study. You pass all examinations, complete all academic requirements, and the degree that you will get is directly by University of London. Meaning that you can stay in Pakistan and get an international degree, which is internationally recognized. So LLB degree जो है उसका the third option है, which is the most popular option in Pakistan at the moment, is the University of London's LLB program. It is for 3 years with a UK-based curriculum curated by the University of London. They take the examinations, they check the examinations, they give the results, and they have affiliated certain schools, certain colleges, universities, who have the right, who have the license to offer the LLB program and give tutorial guidance to students, teach the students the course and curriculum, and offer that university life experience as well. So ये जो LLB प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, it is recognized as a foreign law degree, meaning it is internationally recognized like any degree in the UK. It is for 3 years because it's a foreign degree. The 3-year requirement is met and it is recognized by the Bar Council and the HEC. And it is more costly than the local law degree, obviously, because you pay a university fee to the local university you're studying in. And you also pay a fee to University of London for registration and examinations, right? So it's more expensive than the local law degree. But if you compare going to the UK and doing a 3-year law degree from the UK, it's literally 10% the cost of that. तो अगर आज लेट्स सपोज यूके की डिग्री आप करते हो 3 साल की, तो 3.5-4 करोड़ रुपए अगर लग जाते हैं आपके, 3-4 अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ कर करके 3 साल में, राइट. तो यूनिवर्सिटी लंदन की डिग्री आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की फ़ी एवरेज आउट अगर करें, वहाँ की फ़ी करें, तो इन 3 years इट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड 40 लाख रुपीज़ मे बी, राइट. 40, इफ द पाउंड अप्रिशिएट्स, 45 लाख रुपीज़ over 3 years. And if you do a local law degree, considering all the fee that are on an average, right, if we talk about university fees, right, it's going to cost you for 5 years, it may cost you around maybe 20 lakhs, right, 15 to 20 lakhs. So you're talking about 15 to 20 lakhs for local law degree, but the duration is 5 years. You talk about University of London degree, which is 3 years, you stay in Pakistan and you get a foreign law degree, 40-45 lakh rupees budget आपको बनाना पड़ेगा for 3 years. Or you go abroad and do your 3 years. Or you do a hybrid. Now that hybrid is also available. So University of London, because it's a reputable foreign degree, students have an option कि पहला साल यहाँ पे कर लिया, दूसरे साल और तीसरे साल में यूके ट्रांसफ़र ले लिया, पॉसिबल. सेकेंड ईयर यहाँ से कर लिया 2 साल, तीसरे साल यूके यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर लिया आपने कोई, और वहाँ से आपने कर लिया. या 3 साल यहाँ करके फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए चले गए, बार LLM बैरिस्टर बनने हैं. वो एक सेपरेट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि क्या ऑप्शंस हैं. सो एक हाइब्रिड मॉडल भी आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो. सो देखिए, लॉयर बनने के लिए लॉ डिग्री चाहिए. लॉ डिग्री लेने के लिए पाकिस्तान में 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. नाउ विच एवर ऑप्शन इज़ फीजिबल and whichever option is the best option is something that every student and the parents have to sit down and decide. Now, whatever your aspirations are,
right? If you have a limited budget and you cannot afford even, the 3 year University of London program, so by all means, please apply for a local degree. There are good universities, and you'll learn a lot, and you'll pass and become a lawyer, and you can still become a lawyer. It's not that you need to brush your dreams aside. If you want to, save your time and get an international degree, have the flexibility of transferring abroad, stay locally because of the cultural aspects, and do an LLB. अभी एक ट्रेंड ये भी है कि LLB यहाँ से करेंगे, मास्टर्स के लिए बाहर चले जाएंगे, राइट? बिकॉज पेरेंट्स आर लाइक कि पहले थोड़ा आप मेच्योर हो जाएं, 3 साल वो करें, आप खुद भी ये फील करें कि भाई मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ, आई नीड टू बिकम, आई नीड टू बी मोर, काइंड ऑफ इंक्लूसिव इन माई डिसीजन मेकिंग, एंड देन आई माइट गो अब्रॉड. So great, by all means, do an LLB degree from the University of London. There are multiple universities in Karachi, Islamabad, Lahore, right? Other cities in Pakistan. Enroll there, study the program, pass the exams, and get done with the degree. सो वन ऑफ द थिंग्स आपने जो ये ऑप्शंस बताए हैं, 3 पाथवेज बताए हैं, उसके हवाले से यू मैंशनड अर्लियर दैट ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन देयर रिमेन्स अ कन्फ्यूजन टू मेक अ डिसीजन, एंड यू मैंशन अ वेरी इंटरेस्टिंग पाथवे कि एक हाइब्रिड मॉडल भी है. तो इन मेरे जहन में एक सॉर्ट ऑफ एक सोल्यूशन आ रहा है कि कैन दिस हाइब्रिड सोल्यूशन बी यूज्ड in order to even explore certain pathways, including the LLB option, for maybe a year, and then take that forward. Confusion relax ho jaye ki theek hai, this is what I want to do, and then maybe proceed abroad. So what are your views on that? By all means. So if you want to go abroad, but you don't want to, you're still confused about law, and you might not want to burden your parents with the law degree fee and all of that, right? So you might end up just doing the University of London for 1 year or 2 year until you're clear, and then when you're clear, you can transfer abroad, right? Or you do your 3 years and then apply for your postgraduate education abroad. So until then, 3 years or 5 years जो भी है, उसके अंदर ये भी क्लैरिटी आ जाती है. देखिए, it's not only about कि मुझे लॉयर बनना है. लॉयर क्या है? इट्स अ टाइटल, राइट? यूर लॉयर, यूर एन एडवोकेट. लॉयर बन के करोगे क्या? लॉ इज़ ऑल्सो लाइक इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, तो इसी तरह लॉ के अंदर भी क्रिमिनल वकील होता है, सिविल लॉयर होता है, टैक्सेशन की स्पेशलाइजेशन है, कस्टम्स में किसी ने स्पेशलाइजेशन कस्टम लॉ में की हुई है, वो कस्टम्स के सारे केसेस अपनी स्पेशलाइजेशन बनाई हुई है. बहुत लोग एकेडमिक्स में चले जाते हैं, बहुत लोग लॉ डिग्री के बाद गवर्नमेंट ऑफिस में चले आते हैं, बहुत लोगों को जज बनना होता है तो जुडिशल ऑफिसर्स की तरफ वो करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के. तो it's a huge, there are so many options even if you pick law as a profession, right? अब लोग कहते हैं लिटिगेशन और कॉर्पोरेट, यानी कोर्ट प्रैक्टिस करो या चेंबर लॉयर बनो. ये नहीं है. अब ज़माना इतना चेंज हो गया है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स नाउ विद इन द फील्ड ऑफ लॉ that you need to be clear on what you need to become. So even if you're pursuing postgraduate education after, you need to be very, very, very clear of what you want to do, and that is during your undergraduate years. So holistically अगर देखें तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, राइट, तो आप ए लेवल्स इंटरमीडिएट दें, अप्लाई करें बाहर, डू योर LLB फ्रॉम अब्रॉड. UK इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट बिकॉज उनकी 3 साल की डिग्रियाँ रिकगनाइज है. बाकी USA में भी होता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. बट अगर आपका ये थोड़ा सा वो है कि आप पाकिस्तान वापसी आना चाहते हैं, यहाँ सेटल हो सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, तो इट्स बेटर टू गो टू UK बिकॉज इवन इफ यू कम टू पाकिस्तान विद UK लॉ डिग्री, इट्स मोर रिकगनाइज्ड देन अदर्स. एंड बाकी जगह पे जैसे US के अंदर पहले आप लॉ नहीं कर सकते, आपको बैचलर्स करना पड़ता है कोई और फील्ड के अंदर, फिर आप लॉ की तरफ जा सकते हैं. तो इट बिकम्स अ लॉन्गर आउट, राइट? सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट. फेयर इनफ. एक चीज़ मैं ये भी टच करना चाहूँगा कि हमने शुरू में यही बात की कि एक इंटरमीडिएट का बच्चा है, एक ए लेवल का बच्चा है, वो लॉयर बनना चाह रहा है. अब बाज़ दफ़ा जो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ये बात करते हैं कि मुझे बैरिस्टर बनना है. ठीक है, अब द वर्ड बैरिस्टर इज़ यूज्ड, और इस पे हम बात बहुत तफसील से कर भी चुके हैं एक दूसरे पॉडकास्ट में. मगर मैं चाहूँगा कि इसको हम थोड़ा ब्रीफली रिविज़िट करें कि एक स्टूडेंट है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे बैरिस्टर बनना है. तो इज़ देयर अ डिफरेंस व्हेन वी से कि एक लॉयर बनना है और बैरिस्टर बनना है, और एकेडमिकली व्हाट इज़ दैट डिफरेंस फॉर अ लोकल LLB स्टूडेंट एंड फॉर अ फॉरेन क्वालिफाइड? तो वो थोड़ी आप जर्नी भी बता दें कि बैरिस्टर कैसे बनते हैं. अब देखिए, अब बैरिस्टर अगेन मैंने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था बड़े डिटेल से, तो आई एम जस्ट गोना समराइज दैट.
कि यूके के अंदर यूके का जो बार एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको यूके के कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस अगर चाहिए तो यूके का बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपको यूके में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी होती है उसके करके, और आपको बैरिस्टर का खिताब मिल जाता है। एक खिताब है बैरिस्टर। तो टेक्निकली स्पीकिंग बैरिस्टर के लिए आप जा सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। उसका प्री रिक्विजिट LLB है, लॉ डिग्री। अब मसला ये है कि पाकिस्तानी लॉ डिग्री इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। सो अगर किसी को बैरिस्टर बनना है तो दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर अ फॉरेन लॉ डिग्री। तो आइदर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB कर लें या यूके जाके LLB कर लें, क्योंकि जितने लोकल लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनको यूके जाके कन्वर्जन कोर्स करना पड़ता है बार देने के लिए। तो उनके लिए ऐसा नहीं कि वो नहीं बन सकते, बट उसका लंबा ये राउट हो जाएगा कि 5 साल पहले लोकल लॉ करेंगे, फिर यूके जाके एक GDL कोर्स होता है 1 साल का, कन्वर्जन कोर्स, कि उनकी लोकल लॉ डिग्री उनकी एक कन्वर्ट हो जाती है, फॉरेन लॉ की इक्वलेंस मिल जाती है, समझे, सिंपल सेंस में। और फिर बार का एग्ज़ाम, तो मतलब 2 साल, यानी बार भी 2 साल होगा, तो 5 साल पहले ये किया, फिर 2 साल और 7 साल लगेंगे। तो अगर बैरिस्टर ही बनना है, यू कैन अफोर्ड इट, राइट, सो बेटर कि यू गो टू द यूके, 3 साल करें और 1 साल उसके बाद करें, 4 साल में यू बिकम अ बैरिस्टर इफ़ यू पास एवरीथिंग ऑन टाइम। या LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करें 3 साल, फिर बार के लिए चले जाएँ डायरेक्टली। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। और हमने जैसे ज़िक्र किया कि अब एक स्टूडेंट है जो बाहर जाने का या तो इरादा भी नहीं रखता या जा नहीं सकता फॉर एनी रीज़न, तो अब उसको अगर बैरिस्टर बनना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन है अवेलेबल कि वो पाकिस्तान में ही रहे फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टडीज़, मे बी गो ब्रीफली टू द यूके बट स्टिल क्वालिफाई एज अ बैरिस्टर? कोई ऐसा रोड मैप है एक लोकल लॉ ग्रेजुएट के लिए? लोकल लॉ ग्रेजुएट के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर द BTT प्रोग्राम। उसके लिए भी हमने तफसील से बात की है कि बाहर ट्रांसफर टेस्ट, बस उसके यूके में नहीं हो सकता, वो फिर यहीं पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, खाली एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। उसकी भी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन द अदर पॉडकास्ट वी डिस्कस दैट, सो मे बी पीपल कैन रिव्यू दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लोकल BTT एज वेल। Yes, so that is something we'll invite you to look at the other podcast. Because we've looked at in detail the various pathways in order to become a barrister, and this was something was very relevant because I think हमारी जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं अभी कॉलेज लेवल पे, उनके जहन में बैरिस्टर, बार एट लॉ, ये टर्म्स आई थिंक टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं। तो अगेन इट वुड बी वेरी यूज़फुल कि आप वहाँ जाके उसकी तफसील से आप चीज़ें देखें। इसके अलावा आई थिंक इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू फील दैट students need to be on the lookout, because we've talked in detail in terms of how to get into law and study of law, but if you have anything else you'd like to discuss? My only advice is that make a concrete plan, that even if you're remotely interested in becoming a lawyer, go for it, right? It's a good profession. It's an honorable profession. There are a lot of career opportunities as well, local as well as abroad. But education is obviously very important and relevant. So, based on whatever, don't limit yourself, right? Keep your flexibility and your mind open. Consider your family limitations, cultural limitations, anything else, even your own limitations. If you are not a very studious person, you can still become a lawyer. You can do your law degree. सब डराते हैं, बड़ी मुश्किल पढ़ाई है, नहीं है इतनी मुश्किल, थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी हो जाता है, right? So even if you have like average grades, you can still end up in a university, right? Either local law हो या foreign law करना है या यूनिवर्सिटी लर्न की LLB करनी है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में भी, बाहर भी, जो आपको इनरोल कर लेगी, और आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्लान ज़रूर करिएगा कि भाई देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं जा सकते यूके, तो डोंट बर्डन योर पेरेंट्स और डोंट फोर्स देम और डोंट बी डिप्रेस्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू कांट गो अब्रॉड एंड योर फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड। इट्स फाइन, यू आर लिविंग योर ओन लाइफ पाथ, द अदर पर्सन इज लिविंग हिज ओन। So it's not that if he or she is going abroad in the UK, they will have better career opportunities. No, not at all. There are so many lawyers here in Pakistan who are very successful, very successful. One of the top lawyers in the country, and they have done local law, right? So, and there are other lawyers who have done foreign law and they're also successful. There are lawyers who have done University of London's degree and they're also very successful. So success is all about hard work, right? You need to work hard, you need to learn, you need to be diligent, you need to be disciplined, and there are other aspects that you need to develop over the years to become a successful lawyer. So it's not, degree is only a gateway, an gate opener for you to enter the profession. After that, it's all on merit. तो आप अपने ये 3 ऑप्शंस को दिमाग में रखें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, राइट, एंड पिक एन ऑप्शन विच इज़ feasible for you, your parents. ऐसा नहीं कि आपकी 2 साल अभी कितने
बीच में इश्यूज आए कि बिकॉज कोविड हो गया, लोग वहाँ यूके में बैठे थे, कोविड हो गया, सारा बंद हो गया, उनको यहाँ ना पड़ा, फीस यूके वाली दे रहे थे वो, लेकिन पढ़ ऑनलाइन यहाँ से रहे थे, तो ना एक्सपोजर मिला और पैसे भी इतने ही लग गए. सो एंड ऑफ द डे यू नेवर नो हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड चेंजिंग. आज अगर हम बात करें तो अगर आप कुछ अभी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, क्वाइट अ फ्यू पीपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉरेन लॉ टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, 1 साल करके आए और फिर बोला नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे एक बजटिंग की थी वो नहीं कंप्लीट हो सकी, तो फिर हम ये कर रहे हैं. तो अगेन you did not plan properly. If you did not have the relevant amount of money to go abroad, you should not. A lot of people come to me and say सर वहाँ पे हम काम कर लेंगे और हम खुद फाइनेंस करेंगे. नहीं कर सकते. Student visa पे you are allowed only to work a minimum number of hours, and that too there's certain types of jobs you can do and you can only earn that much, which may cover your food bills. Your accommodation, university tuition will never be covered. So that was a time in the past when people and parents did that. अब नहीं हो सकता वो भी. So you have to be very clear on these aspects from the beginning, right? And then choose a pathway which resonates with your financial background, your cultural background, your own personal preferences and mindsets, and your family's mindsets as well. Because we in Pakistan we make a cumulative decision. Family मिल के decide करती है, right? So ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 3 options हैं. Pick an option, do your LLB, become a lawyer, and then world is yours if you work hard. Okay. So thank you so much, Sir AQ, once again for joining us and enlightening us with the information for LLB. Thank you, everyone. We will be back with our next episode regarding further progression in the law fraternity.